Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So my dear students, today I have come with yet another interesting video, and before I start I want to meet you all someone. मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ. See all of you. His name is Chunky. He is a baby boy and his name is Chunky. Say hi everyone. Hello Chunky. Hello बोलिए Chunky को. And Chunky is also saying hello. Yeah, he is so cute, na? So, dear students, Chunky is so naughty and he always crawl and crawl. When his mama trying to catch him, he always crawl. See how he is crawling? See how he is crawling? Mm, ah, ah, mm, 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 mm. See how he is crawling fast. Have you ever seen 6 to 5 months old child crawling like a Chunky? Yes, you must have seen ना. आपने ज़रूर देखा होगा चंकी जैसे छोटे छोटे बच्चों को, बेबीज़ को क्रॉल करते हुए. How they crawl so fast, ना? So, my dear students, similarly Chunky, there are lot of animals, insects, birds who crawl. Yes, they also crawl. Crawl means रेंगना. How Chunky is crawling, see all of you? चू 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 ऐसे ऐसे करके ये क्रॉल करता है. ठीक है, तो हमारे पास कुछ जानवर भी हमारे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो क्रॉल करते हैं, सच एज crocodile, snake and alligator, turtle. There are a lot of animals, insects, birds who crawl. So today's we are going to learn about them. Okay, let's begin. So today's chapter name is Crawlies. Let's read. Some animals crawl on the ground. Some of them have legs to crawl. Some crawlies do not have legs. So there are some animals who crawl such as crocodile, lizard, snake, alligator and chameleon. So dear students, can you tell me where do we find crocodile and the alligator? Where do we see? हम कहाँ देखते हैं? So normally they live near lakes, rivers, wetlands and muddy area. Okay? हम इन्हें zoo में भी देखते हैं. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? रिवर्स में होते हैं, लेक्स में होते हैं, मडी एरियाज़ में होते हैं. एंड यू नो वॉट, दे आर सो डेंजरस. दे क्रोल विद देयर लेग्स. ओके, एज यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन, दे हैव लेग्स, सो दे आर एबल टू क्रोल विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. अपने लेग से ये क्रॉल करते हैं and they are so dangerous. And listen all of you, don't try to tease them and disturb them because they can harm you. So don't try to close them क्योंकि ये बहुत ही dangerous होते हैं and they can harm you. Okay, so the next is lizard and chameleon. So my dear students, you must have seen both of them near your house and around your house. या अपने घर में भी आपने देखा होगा. लिजर्ड को तो ज़रूर देखा होगा. क्यों? और बहुत लोग तो लिजर्ड से डरते भी होंगे ना. सो chameleon मीन्स गिरगिट एंड लिजर्ड मीन यू ऑल नो छिपकली. तो chameleon, ये जो chameleon होता है ये आपको गार्डन्स में देखने को मिल जाएगा, और फॉरेस्ट में, मरीज एरिया में, एंड इवन अपने घर के आसपास भी हमें जहाँ पे पेड़ पौधे, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे chameleon हमें देखने को मिल जाते हैं. और लिजर्ड हमें अपने घर के वॉल्स पर और ग्राउंड में भी तो अब देखने को मिलती हैं. ठीक है, तो हैव यू एवर सीन chameleon चेंजिंग कलर्स? येस, दे चेंज देयर कलर्स. ये अपने कलर्स भी बदलते हैं. और इट इज़ सेड सो, ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू सी द chameleon चेंजिंग कलर्स, द चेंज योर कलर टू. एंड आपका भी कलर चेंज हो जाएगा. अगर आप इनको कलर चेंज करते हुए देखते हो तो आपका भी कलर चेंज हो जाएगा. सो डोंट ट्राई टू सी देम when they are changing their colors. Okay, so next is snake.
Can you make the sound of a snake? Let's do it with me. Hiss. Let's do it again. Hiss. And they have no legs. Yes, you all are right. They have no legs. And how they crawl? They crawl like a ऐसे. Okay, do with me. They crawl like a in this way. So today we have learned about crawlies, because some of them have legs and some of them have no legs. So lizard, chameleon, crocodile, snake and alligator. Don't try to tease them, don't try to harm them, because they can harm you also. Okay, so this was today's video. Hope you like it. If you like it, then please hit the like button, subscribe my channel. Thank you.